Today we are going to start our new chapter, that is states of matter. So in this chapter we will discuss about different state of matter, how the different type of attractions are responsible for different state of matter. So what is and what we understood by this chapter is, we know that we are surroundings, and anything that occupies space and have volume is known as matter. The matter may be the food, the vehicle, the gadget, the day to day material we use. So, everything around us or in the surroundings are known as matter. The air we breathe or the water we drink, these are also matter. Anything that occupies space and have more mass and volume is known as matter. For instance, in classroom, the benches, the students sit, some space of the classroom left. These all also have mass and volume. So these are also regarding as matter. According to Indian philosopher, matter we classify into five primitive elements. This is basic idea of how the evolution of human happens, how not evolution, how the generation, how the beginning of the people starts. These are known as पंच तत्व. भाई पांच तत्व जिसे बोलते हैं, air, soil, fire and water. Every living and non-living is made up of these five primitive elements. Okay, so you can see in this particular cartoon, the bench is made up of wood that comes from tree, grows in soil in presence of air. It requires heat and water for production. Thus, every matter directly or indirectly made of पंच तत्व. That is according to Indian philosopher. पांच तत्वों से मिलके बना है सब कुछ. That is हवा, पानी, मिट्टी, आग. Okay. And feelings are also there. So next is matter can be categorized into three states. Everybody knows about it. This is a basic stuff which we have to complete. That matter is maybe solid, liquid or gaseous state. Okay. So what do you understand by solid state? I am discussing about some very few the properties of solid state. The solid state have definite shape due to strong intermolecular forces of attractions. Solid, liquid and gaseous differences and their properties we have discussed earlier in our first chapter. Solid have distinct boundaries, solid have fixed volume, solid cannot flow, so they cannot known as fluids. They have negligible compressibility. Means what? Why? The particles between the solids are negligible compressible. The means is when you can understand this by a situation. If we have a classroom full of students and there is no space, even a single micron space between the particles, that not even a single student can stand or sit in that particular room, that means that room is incompressible or compressibility is very low, negligible. That's why the solid, the space or the distance between different particles is very less, and they are bound together by very strong forces of attractions, due to which the solids are incompressible. Okay, due to negligible distance between the molecules, they possesses the tendency to uphold their shape when exposed to external force. If we apply some force, like say for example, if we have a block of wood, okay, and I am applying some pressure on that, okay, now you can see and you can find out that if we apply pressure, that means the particles of molecules have to compress or have to change their shape, but they don't. Why? Due to
Strong forces of attraction, they do not change their shape when external force is applied. अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो उससे शेप चेंज नहीं होता. ओके, दे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, दे आर रिजिड. ये ज़्यादा फोर्स लगाने पे टूट जाते हैं, ये रिजिड होते हैं. रिजिड को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप नहीं चेंज करेंगे, वे स्ट्रेट अवे ब्रेक डाउन हो जाएगा. दे हैव हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज. डिफ्यूज का मतलब होता है अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना. जैसे गैसेस है, गैसेस जहाँ पे उनका प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे प्रेशर कम है उस तरफ मूव करती हैं, उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं. इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन डिफ्यूज़न नहीं करते ये सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. As most of you knows that liquid do not have definite shape. It takes up the shape of container in which it is kept. Means shape definite नहीं रहेगा, volume क्या रहेगा, definite रहेगा. Why? What is the reason that shape is not definite? Due to weak intermolecular forces of attractions as compared to solids. Now the most important point, they can flow from higher to lower level. The effect of gravity is applied. Okay, now liquid states and liquid particles are also known as fluid because they can flow, and gases is also known as fluid because they can flow. A liquid is compressible. Liquid compress किया जा सकता है due to large distance between the neighboring molecule. अब अगर जैसे मैंने एक सिचुएशन बताई थी, एक रूम में सारे स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पैक्ट हैं कि एक भी स्टूडेंट उस रूम में नहीं आ सकता. अब हमने उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया, उन स्टूडेंट्स को दूर दूर खड़ा कर दिया. तो उसके बाद हम उनमें और स्टूडेंट्स को ला सकते हैं. इसका मतलब उसे कंप्रेस कर सकते हैं. हम सारे स्टूडेंट्स को एक कोने में करके और स्टूडेंट्स को वहाँ पे रूम में घुसा सकते हैं. So liquid compressible है. Why? What is the reason? The reason is large distance between the particles, but solid are not. Okay. Gases are highly compressible. इसीलिए आपने compressed natural gas की बात सुनी होगी भी, जिसको हम CNG बोलते हैं. Okay. Liquids की density कम होती है as compared to solids. A liquid can diffuse into another liquid due to the fact that molecules move faster in a liquid as compared to gases. लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज भी हो सकते हैं और वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज होते हैं क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी चलते हैं, ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं. नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट. नाइदर डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम due to the weakest intermolecular forces. ये उसी पर्टिकुलर कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें पुट किया जाता है. Gases are not rigid. They are easily compressible. Why? Due to excess space between the gases which compress on applying pressure. Now think of it as situation. If in our atmosphere air is not gas, air is solid, will you be able to move your hands, legs and move your any parts of the body? Okay, what do you think? The answer is no, because if the air is solid, the intermolecular forces are stronger, you cannot move yourself. That's why air is gas, the particles have a very high space between them, so on applying the pressure gases can be easily compressed. They can easily undergo diffusion. Now the diffusion is important. Diffusion is the movement of particles from high pressure to low pressure. Movement of gaseous particle from high pressure to low pressure. They can easily diffuse due to which because the particles of gas moves very fast.
दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितनी भी डायरेक्शंस हैं भाई, उन सारी डायरेक्शंस में गैसियस पार्टिकल्स घूम सकते हैं। दे आर ऑलवेज मोबाइल, दे आर नॉट एट रेस्ट। वो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कभी रेस्ट भी नहीं रहते। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट very important topic we have to discuss is what are intermolecular forces. Intermolecular forces. Intermolecular forces are the force of attractions and repulsion existing between the interacting particles of atoms or molecules in a compound. Now you can see and you can understand this thing. If we have a row of 10 students, okay, we have a row of 10 students and every student is holding the hand of other student. That hand holding is a force of attractions. Okay, and now if we say that two students are not not holding their hands, that means these two students are repelling each other, they don't like each other, maybe the thing. That means force of attractions between the particles. जैसे अगर मैं HCl की बात करता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो आपके पास है, हमने भाई पोलैरिटी की बात की थी और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी। जो एटम अपने पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरेट होते हैं वो होते हैं इन केस if electronegative atom is attached to some less electronegative atom, so there is generation of dipole. dipoles मतलब दो पोल, पोल्स कौन से भी, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। ओके, so next is the attractive intermolecular forces are known as van der Waals forces. जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनको हम सारों को मिला के van der Waals फोर्सेस बोलते हैं, जिसमें van der Waals फोर्सेस में इंक्लूड कौन कौन से फोर्सेस है भाई, डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन केस ऑफ सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पैक्ड thereby making solid incompressible and high density। मैंने बताया था अभी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। देयर इज नो इनफ स्पेस और स्पेस बिटवीन द सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स जिनसे मिलके सॉलिड बना है। ओके, नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन केस ऑफ लिक्विड कीप द पार्टिकल्स tied to each other but cannot keep them in fixed position। इसीलिए वो फ्लो करते हैं लिक्विड and have a definite shape, not a definite shape, have a definite volume basically। Okay, intermolecular forces in case of liquid keeps the particles tied to each other but cannot keep them in fixed position। in case of liquid particles एक दूसरे के साथ tied है, इकट्ठे हैं, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फ्लो कर सकते हैं और उनका वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। दे कैन टेक द शेप ऑफ द पर्टिकुलर कंटेनर। नाउ इन केस ऑफ गैसेस, extremely weak intermolecular forces of attractions, so the constituent particle can move freely। you can see here this is a particular showing that how the gas, if we say that some gas is letting out
or some like carbon dioxide from chimneys are getting outside, the particle space is very less because of very weak strong weak intermolecular forces of attractions. Okay, now dispersion force or London force, this is a very important thing. London force was given by a German physicist, that is Fritz London. Okay, this is not related to any place like London. It is given by a scientist known as Fritz London, that's why it's known as London forces. Refer to attractive force existing between two temporary dipoles. अब अगर हमारे पास कोई दो नोबल गैसेस हैं, अब नोबल गैसेस में क्या होता है भाई, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 होते हैं या फिर 2 होते हैं। इस चीज़ का हमने जिक्र करा था डबलेट और ऑक्टेट में, जिस टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात की थी। दीज फोर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। विच फोर्स? लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। नाउ हाउ दे attraction forces are applied? The interaction energy जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जितनी डिस्टेंस है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगी सिक्स्थ पावर के। ओके, लेट अस कंसिडर टू एटम्स, यू कैन सी in this picture. Let us consider two atoms P and Q. Okay, when we see these two atoms P and Q, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आपने पढ़ा दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह रिवॉल्व ना करके एक साइड में ज़्यादा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। सिमेट्रिकल मतलब अपनी पर्टिकुलर पाथ में ही वो जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अनसिमेट्रिकल हो जाए तो चार्ज क्लाउड जो है, जहाँ पे चार्ज एक जगह ज़्यादा हो जाएगा और एक जगह कम हो जाएगा। This leads to the generation of instantaneous dipole. This point has to kept in mind that there is formation of instantaneous dipole on atom P for very short time. This instantaneous dipole on P alters the electron density of Q, and this also generate or induce a dipole in atom Q. These temporary dipoles attract each other. Now see this picture. Now you can see in this picture atom P and atom Q has a symmetrical distribution of electronic charge. When they come closer to each other, electron repulsion is here. So if this electron here repel this electron, there is formation of a unsymmetrical distribution of electronic charge. Means what? एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और एक जगह इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हुए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स होते हैं अभी बहुत कम समय के लिए डाइपोल बनते हैं और एकदम बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा बनते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब एक जो सिंगल ग्राम हम लेते हैं ऑक्सीजन में, उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, या फिर हीलियम लेते हैं। इसी वजह से बहुत सारे इंस्टेंटेनियस डाइपोल रेगुलरली बनते रहते हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होता रहता है। ओके, सो देयर आर टू चांसेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए, जिस तरफ होगी भाई उस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं इनको हम डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स बोलते हैं। ओके,
These forces are applicable to very short distance. ये important है भाई, हमने पढ़ा अभी. डिस्टेंस की पावर का सिक्स्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर बहुत कम डिस्टेंस है तभी फोर्सेस अवेलेबल है. 500 पिकोमीटर, आपको पिकोमीटर याद है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको. नैनोमीटर में भी 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं और पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं. The magnitude of this force depend upon polarizability of interacting particles. Means what? जितना ज़्यादा चार्ज का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, जो एक पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी रहेगा और उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज next we will discuss about dipole induced dipole forces, which we will discuss in our next lecture.